Good evening, everyone. Welcome to today's live expiry session for gold and gold mini contracts. So आज gold and gold mini contracts का monthly expiry है. So as we have started this practice for every commodities options expiry, today we'll be looking after gold charts and try to find any possible trade that we can take. So I'll just quickly share my screen and let's go through the charts, how the market is looking, which commodities are performing, and which kind of trades we can take today. So this is the gold chart. So today gold मेगा and gold mini दोनों का एक्सपायरी है. ऑलमोस्ट दोनों के प्रीमियम सेम है. सो आई वुड लाइक टू टेल द ट्रेडर्स कि इसमें सिर्फ लॉट साइज का डिफरेंस है. अगर आप देखोगे एट द मनी के प्रीमियम्स देखोगे, इफ यू आर ट्रेडिंग थ्रू एनी ऐप, सो उसमें अगर आप 95,000 का कॉल एंड पुट के प्राइजेस देखोगे तो इट्स ऑलमोस्ट सेम. 95,000 का कॉल जो है अराउंड 290 चल रहा है एंड 95,000 का पुट इज ट्रेडिंग एट अराउंड 220. So I would ask everyone to keep this two strikes on radar. So either we will go short or long. That next 15 minutes will decide. And आपको every trader knows, commodity trader knows that जो लाइव डेटाज आते हैं, जो इवनिंग में यूएस मार्केट से जो डेटाज आते हैं उसका इम्पैक्ट होता है. सो टुडे देयर वाज अ डेटा व्हिच वाज गोइंग टू बी रिलीज्ड एट 6 p.m. सो लेट्स जस्ट चेक. सो ये ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स का डेटा था. सो इट्स स्लाइटली पॉजिटिव फॉर डॉलर, सो दैट शुड बी नेगेटिव फॉर बुलियंस. सो इसका इनवर्स रिलेशन होता है गोल्ड एंड सिल्वर के साथ. अगर जो भी डेटा आता है यूएस इकोनॉमी के लिए, इफ इट्स पॉजिटिव फॉर डॉलर इंडेक्स, तो इट्स नेगेटिव फॉर गोल्ड एंड सिल्वर. सो लेट्स सी नेक्स्ट 15 मिनट्स में हमें कुछ ट्रेड मिलता है या नहीं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स जस्ट लुक एट द ओवरऑल पिक्चर. जो वीकली चार्ट हम लोग पहले देखते हैं कि स्पॉट गोल्ड ने कैसे परफॉर्म किया है. ये स्पॉट गोल्ड का एक चार्ट है. वी हैव सीन अ गुड रन अप. यहाँ 2,800 से लेके अभी रिसेंटली 3,500 तक गया था. देन अगेन इट केम बैक टू 3,100, 150 काइंड ऑफ लेवल्स एंड अगेन वी आर एट 3,300. बट व्हाट्स हैपनिंग इज इट्स नॉट ब्रेकिंग विथ फोर्स. बहुत ज्यादा एकदम मोमेंटम से ऊपर साइड में ब्रेक नहीं कर पा रहा है. लास्ट अगर आप देखोगे लास्ट 2-3 सेशंस हो गए, 1-2 वीक से ये ऊपर ब्रेक नहीं कर पा रहे. सो व्हाई इट्स हैपनिंग? सो वी हैव सीन दिस ऑल टाइम हाई कैंडल. सो इट्स अ दोजी कैंडल एंड वो रेड कैंडल था. उसके बाद और एक, उसके बाद नेक्स्ट जो कैंडल बना था वो रेड था. उसके बाद बहुत ज्यादा मोमेंटम से प्राइजेस ऊपर नहीं जा पाए. प्राइजेस आर लिविंग अ टेल ऑन द अपसाइड, एक वीक छोड़ रहे. सो इट्स अ साइन कि समवेयर gold can exhaust, the trend can exhaust. I'm not saying it's confirmed. अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है कि ये गोल्ड का ट्रेंड एग्जॉस्ट हो चुका है या नहीं. बट वॉट एवर गोज अप इट हैज टू कम डाउन सम डे. कभी तो उसको नीचे आना है. सो इट माइट टॉप आउट ओवर हियर. इट्स नॉट अ साइन येट, बट देर आर साइंस कि यहाँ पे अभी थोड़ा एग्जॉशन दिख रहा है. So yesterday, if traders would have attended yesterday's our weekly session also we mentioned the level of 3,400. So $3,400 का level जब तक cross नहीं हो रहा है, then till then we can't expect a good momentum on the higher side. बहुत ज्यादा parabolic move on the higher side हम लोग expect नहीं कर सकते. वो बहुत बड़ा resistance है अभी $3,400 का. Today also prices corrected by more than around $40 from the highs और अभी 3,294 3,295 के लेवल में चल रहा है. तो लेट्स जस्ट क्विकली लुक एट द M6 चार्ट. M6 चार्ट में आप देख सकते हो एक कंटिन्यूस फॉल है आज. सुबह से ओपन हुए थे प्राइजेस स्लाइटली हायर, बट उसके बाद जो फॉल आया है वो कंटिन्यूस रहा है. एंड अभी रिसेंटली प्राइस ने जो लो बनाया 94,900 के आसपास, वहां से प्राइस थोड़े रिकवर हो गए एंड 95,080 95,100 के आसपास चल रहे. दिस इज वन फॉलिंग ट्रेंड लाइन जो ये रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट कर सकता है बिकॉज इट वॉज प्रीवियस सपोर्ट ऑल्सो, प्रीवियस जोन ऑल्सो. एक प्राइस एक्शन जोन था प्रीवियस, तो वहां पे प्राइजेस रेजिस्ट कर सकते हैं. सो इफ वी गेट अ रेड कैंडल इन द नेक्स्ट 15 मिनट्स वी विल गो शॉर्ट ऑन गोल्ड, एंड इफ यू गेट अ ग्रीन कैंडल ऑन गोल्ड इन द नेक्स्ट 15 मिनट्स देन वी विल गो लॉन्ग ऑन गोल्ड. अगर इसके बाहर ब्रेकआउट करके अगर जा रहा है गोल्ड, देन वी विल गो फॉर द कॉल ऑप्शन 95,000, एंड इफ इट्स गोइंग डाउन देन विल गो फॉर द पुट ऑप्शन ऑफ 95,000. अभी इसमें मेगा एंड मिनी क्यू है कॉन्ट्रैक्ट. सो इसमें आपका रिस्क एपेटाइट जिस हिसाब से रहेगा आप उसके हिसाब से ट्रेड कर सकते हो.
जो मेगा कॉन्ट्रैक्ट रहेगा दैट विल रिक्वायर मोर money in your account, more margin. I would say you'll have to pay more premium than the mini contracts. So mini contract ka lot size is 10 and mega contract is 100. So if you are buying a premium of 300 rupees, so mega contract will require 30,000 rupees and mini contract will require 3,000 rupees. So if you want to buy multiple lots, you can better you can trade in mini contracts and you can like keep on adding your position. So अभी हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट 15 मिनट्स में ये कैसे परफॉर्म कर रहा है. अभी तक तो इसमें ना ही ब्रेकआउट आया है और ना ही इसने साइंस दिया है कि ये नीचे जा सकता है. वी विल वेट कि 95,000 के नीचे अगर जाता है देन वी विल गो फॉर अ पुट ऑप्शन. एंड ये जो रिसेंट हाई बना था अभी 95,160 उसके ऊपर जाता है देन वी विल गो फॉर अ कॉल ऑप्शन. So I would ask everyone to keep 95,000 calls and puts on radar. 95,000 का कॉल चल रहा है 278 and 95,000 का पुट चल रहा है 222 in the mini options. मेगा का भी almost same ही है. So you can trade in mega options if you are comfortable with the risk. Till then, let's just analyze other commodities. Crude में भी आज अच्छा momentum है on the both sides trading. It's trapped in a range. So crude का chart quickly देख लेते हैं. So it's trapped within a range. इसमें ऊपर में 5450 5440 के आसपास एक रेजिस्टेंस है. And for intraday, it's trading near a very good support. So अभी 5230 चल रहा है. This level, this trend line support is around 5210. So 5210 के नीचे अगर जाता है then we might see a good fall. So I would suggest कि 5210 के नीचे जाता है तो आप put option ले सकते हो इसमें. So इसमें भी आप 5200 का put option radar पे रख सकते हो. And your stop loss would be around 527080 on the future side. Let's see gold में कुछ movement आता है या नहीं. अभी तक तो stable ही है. It's trading at the same range, 95,060. Today there was a momentum like purely on the downside. There was a momentum. It's a trending movement. So as a trending movement में option selling would not be advisable. So we will look for option buying trade. अगर कुछ option buying का trade मिलता है तो we will take that trade. Let's just analyze silver also quickly. Silver also has fallen today. तो सिल्वर में भी अभी रिसेंट सपोर्ट उसका 96,700 के आसपास है. 96,700 का लेवल अगर ब्रेक होता है देन वी माइट सी अ करेक्शन, मोर करेक्शन इन सिल्वर. लेट मी शो यू द सिल्वर चार्ट हायर टाइम फ्रेम. हायर टाइम फ्रेम में ये बहुत टाइम से एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल में ट्रेड कर रहा था. उसके बाद ब्रेकआउट दिया है बट प्राइजेस आर नॉट सस्टेनिंग ऑन द हायर साइड. ये फिर से अभी उसको रीटेस्ट करने आए यहाँ पे. सो अगर ये रीटेस्ट होके फिर से ऊपर जाता है इट कुड गो. बट अगर इसके नीचे आता है आई वुड से 95,000 वुड बी द सपोर्ट. 95,500 उसके नीचे अगर जाता है देन वी माइट सी अ मोर फॉल. गोल्ड उतने में अभी नीचे आ रहा है 95,017 95,000. ओके 95,000 के नीचे चला गया गोल्ड. सो व्हाट वी विल डू, वी विल बाय 95,000 पुट which is trading at 258. And as long as it's not breaking above 95,180, we will hold the put. So 262, 265 का भाव चल रहा है 95,000 के put का. So you can buy 95,000 put, and as long as it's not breaking above this range, we will hold the put in the next 15-20 minutes. So 95,000 का put है 251, 260 के रेंज में है अभी. We initiated at around 262. Let's see if price respects this resistance or it breaks above the resistance. So 95,000 के नीचे एक टिक तो मारा है around 94,998 का एग्जैक्ट लो मार के अभी ऊपर आया. But you can enter in put. It's showing that it may go down. So next 6 minutes, this 15 minutes candle will close and can give us the opportunity on the short side. But if it goes above 95,180, we are going to exit the trade. So I would suggest to be ready. Those who have entered at 250, 260 kind of levels. Meanwhile, silver is also going down. 96,830 आ गया. जैसे मैंने बताया 96,700 का उसमें लेवल रहेगा. 96,700 के नीचे अगर जाता है then you can enter into the short side.
डेटा भी जो आया है that is supportive for dollar, which is negative for gold and silver. So let's see if it's giving us a chance to trade on the short side. पुट का जो रेट है थोड़ा डीके हो गया है, 225 227 चल रहा है. We initiated at 262, but let's see if it's not breaking 95 150 170 kind of levels, then we will hold on to it. If it's breaking above that, we will exit the position. Crude has not I would say 5210 जो मैंने सपोर्ट बोला था उसने ब्रेक नहीं किया है. अगेन इट रिवर्स्ड एंड ऊपर आ गया है 525456. सो उसमें भी 5300 का रेजिस्टेंस है. As long as 5300 is not breaking, I would not suggest to go on the long side also. So ये जो zone है 5290 5300, I would suggest to buy only above this zone. Otherwise it may trap buyers. Again it may go down from here. So there's a supply zone. So gold थोड़ा stable हो गया 95,050 पे. Our option is at 236. If again it breaks below this low, exact actually उसने 95,000 के नीचे लो मार के ऊपर आया, but if it breaks again below that low, then we might see a sharp fall. We might see it taking out the recent low also. So let's see how it performs in next 15 minutes. अभी 15 मिनट का कैंडल एक क्लोज हो जाएगा 3 मिनट में, उसके बाद we will get another candle in next 15 minutes. 95,016 चल रहा है. Crude is at 5253. Let's see how other commodities are behaving. Okay, so silver मैंने जैसे बताया 96,700 का सपोर्ट था, उसने 96,700 ब्रेक कर दिया एक्चुअली. 96,500 आ गया ऑलमोस्ट. So it we might see a good fall in silver also in next I would say an hour 2 hours. So one can keep watch on silver also. Gold फिर से 95,000 के आसपास आ गया है. Our option is at 253 now. So as long as 95 180 is not breaking, we will hold on this position. In 2 minutes we will get a closing of this 15 minutes candle. उसके बाद we can better decide if we can add on to our positions or stay put with the same positions. Today natural gas also going very good actually. मतलब lower level से recover हो गया natural gas. So natural gas में भी एक opportunity है. If traders are watching natural gas, they can trade natural gas also. So इसमें भी एक opportunity है. 320 call you can go for, and your stop loss will be 314. So 314 का stop loss लेके आप natural gas buy कर सकते हो intraday के लिए, and you can expect the targets of 320 627 on the higher side. Gold अभी range bound हो गया है. 1 minute to go to close the candle. If we are not able to close this trade by 6:30, then I would be giving you the time stop. कितने बजे तक ट्रेड होल्ड करना है, तब तक आप ट्रेड होल्ड कर सकते हो. आई वुड सजेस्ट कि 95 180 200 जब तक ब्रेक नहीं हो रहा है, आई वुड सजेस्ट टू होल्ड दिस ट्रेड till 8 p.m. 9 p.m. Silver is going more down. 96,550 आ गया है. Gold is trading sideways now. Crude is again coming down, but still crude should break below 5210. 5210 के नीचे ब्रेक होता है, that will be more convincing trade. So I would suggest to go short only below 5210. Spot gold is at 3294 3293. Okay, so one
15 मिनट्स कैंडल इज क्लोज्ड, अभी नया कैंडल ओपन हो चुका है. लेट्स सी इफ नेक्स्ट 15 मिनट्स गिव अस अ प्रॉफिटेबल ट्रेड और नॉट. अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट नहीं होता है ऊपर के साइड में, देन वी माइट गेट अ गुड फॉल फ्रॉम हियर इन गोल्ड. सो हमारा प्रीमियम भी 240 के आसपास है. वी इनिशिएटेड इट एट 262. प्राइस तो ज्यादा मूव नहीं किया है, बट इट्स एक्सपायरी डे, सो विल बी सीइंग more decay in premiums. Let's see in next 5-10 minutes what we can catch or we get stopped out. Other commodities जैसे natural gas today is trending on the higher side, so you can enter in natural gas. Crude oil 5248. Silver has also broken the support. You can trade short on the silver. In the base metals, there's no trade actually. Base metals both ही range bound है, so I would suggest to avoid the base metals. Let's just focus on gold. 95,050 आ गए. This is one of the reversal candles. This is green candle. But what happens when जब भी इतना बड़ा fall आया है, sometimes reversals fail. So that's why we are taking the short trade over here. अगर ये zone cross नहीं होता है, then again we might see a fall. $95,000 60-70 चल रहा है अभी. Premium is at 220. Spot gold is slightly recovering. 3295 आ गया. If we don't get an exit in next 10 minutes, I would suggest you to hold till 95, 180, 190 kind of levels. Otherwise, so now it's at 95,088. So we have another data at 7:30. आप फॉरेक्स फैक्ट्री अगर देखते हो तो फॉरेक्स फैक्ट्री पे आपको दिखेगा 7:30 को सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा इज देयर. सो उसका भी इम्पैक्ट 7:30 के बाद आ सकता है प्राइजेस के लिए गोल्ड एंड सिल्वर के. सो एज आई एक्सप्लेन किया, कोई भी डेटा अगर पॉजिटिव आता है डॉलर के लिए, सो इट्स नेगेटिव फॉर गोल्ड एंड सिल्वर. And if it's negative for dollar, then it's positive for gold and silver. So there's an inverse relation between the data impact. 95,070 80 का भाव है अभी. क्रूड इज गोइंग अप, ट्राइंग टू गो अप. उसका ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, सो वी माइट सी अ ब्रेकआउट ऑन द हायर साइड ऑल्सो. ऐसे नहीं होता कि नीचे ही ब्रेकआउट देगा, ऊपर भी दे सकता है. बट 5300 वुड बी द क्रूशियल लेवल. 5300 के ऊपर ही आई वुड सजेस्ट समवन शुड गो लॉन्ग. Still gold at same level, 95,000 60 70, not moving. सो दिस जो 6 बजे का डेटा आया उसका ज्यादा इम्पैक्ट हुआ नहीं अभी तक. अदरवाइज वी वुड हैव सीन सम मूवमेंट, बिकॉज लास्ट अगर हम लोग जब से सेशन स्टार्ट हुआ है 20 मिनट्स वी हैव सीन गोल्ड मूविंग बिटवीन दिस 100 रुपीज रेंज ओनली. $95,000 60 70 again. Silver again near 96 700. There's no momentum in base metals, so I would not suggest base metals today. Otherwise, there would have been some trade. Let's focus on gold only. 95,000 50 60.
₹30 का मूवमेंट हुआ है, सिर्फ 30-40 रुपए का, फिर भी हमारा जो प्रीमियम है दैट हैज गॉन टू 225 फ्रॉम 262। सो ये ₹100 के रेंज में ₹30 का ऑलमोस्ट प्रीमियम का डीके हो चुका है। सो दिस इज बिकॉज ऑफ द एक्सपायरी डे। इफ इन द इवनिंग एज आई एक्सप्लेन 7:30 बजे जो डेटा है उसके उसके बाद अगर ये लो ब्रेक होता है विच इज 94,930, तो 94,930 का लो अगर ब्रेक होता है तो आई वुड सजेस्ट ट्रेडर्स टू ऐड मोर पोजीशंस ऑन द शॉर्ट साइड। तो आपने जो फुट बाय किया है उसमें आप और ऐड कर सकते हो, बिकॉज इट्स एन एक्सपायरी डे। तो आपको क्या होगा कि जो इन द मनी होंगे ऑप्शंस आपके 95,000 के जो पुट्स होंगे वो इन द मनी होंगे, वो एकदम फास्ट होंगे। इफ देयर इज अ मूवमेंट ऑफ 300-500 पॉइंट्स ऑन द डाउन साइड, तो आपका जो मूवमेंट रहेगा वो फास्ट रहेगा। तो 94,900 के नीचे आई वुड suggest to add more positions on the short side. And if it goes above 95,200, then you can exit your short trade and you can go for the long trade, because that will confirm the reversal for the day. ये जो रिवर्सल कैंडल बना है इसके हाई के ऊपर, जो कंफर्मेशन कैंडल है उसके हाई के ऊपर अगर ब्रेक होता है गोल्ड, देन दैट वुड बी अ रिवर्सल ट्रेड। सो उसके 95,200 के ऊपर यू कैन गो लॉन्ग। Still there are 10 minutes left, 9 minutes left for the candle. We will see how it behaves. 95,080, 70. Silver is again coming down, 96,600. So gold is steadily trying to go on the higher side. हमारा जो प्रीमियम है 210 हो चुका है। जब तक ये कैंडल का जो हाई नहीं ब्रेक होता, वी विल नॉट exit the position 95, 160, 170. I would suggest 180 we will keep the buffer. 95, 180 break होता है, we will exit the position. Because that's the perfect zone where price action has happened in the past also. So वहां से prices reverse हो सकते हैं फिर से। Let's see. Again silver has came down. Okay, 520 आ चुका है सिल्वर, 700 तक गया था जस्ट, अगेन इट हैज केम डाउन टू 520. So we might see a good fall in silver also if it sustains below 90, 96,700. So if someone is looking to short silver, then they can keep a stop loss at around, I would suggest 97,300 kind of levels. I would suggest to go with the options only. अब options देख सकते हो। Okay, gold has come down now, नहीं ब्रेक कर रहा है ऊपर की साइड में, सो वी माइट सी अ गुड फॉल। 94,900 ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं अभी। जो स्पॉट गोल्ड है वो भी 329293 आ चुका है। हमारा प्रीमियम लेकिन 230 हो चुका है, 230, 35 हो चुका है। सो लेट्स सी ये ब्रेक होता है या नहीं नीचे के साइड में। टिल द टाइम इट्स नॉट ब्रेकिंग अबाउट 95, 180, आई वुड सजेस्ट टू होल्ड अ पोजीशन। इवनिंग सेशन में क्या हो सकता है मैं नहीं पता। सो 94,900 ब्रेक होने के बाद देयर माइट बी अ वेरी शार्प। Today, as I explained, today we are not suggesting any option selling strategy, as we have seen a good momentum on the lower side, and the momentum is likely to continue on the lower side. तो ऐसे टाइम में straddle या strangle करना थोड़ा risky रहेगा. So that's why we are going with the option buying trades. स्पॉट गोल्ड का भी अगर लो देखेंगे आज का 3288 के आसपास है, वो भी अगर ब्रेक होता है, which is equivalent to the 94,900 level on MCX, उसके बाद we can see a sharp fall. Still we are not able to catch any momentum, but we might get the momentum in the evening.
As you are approaching towards the end of the session, I would ask everyone to keep the stop loss of 95 180. 95 180 जैसे ही futures में break होता है gold का June contract, then I would suggest to exit the positions on the short side. जो भी 95,000 का put suggest किया है, जो 260 पे suggest किया था, 62 पे, that is trading at around 230 now. As long as it's not breaking above 95 180, you hold on the position. And अगर 94 900 के नीचे break होता है, I would ask the traders who are able to take good risk, they can add on to their positions, they can pyramid into their positions. So a profitable trader always pyramids in profit. जब उसके डायरेक्शन में जाता है पोजीशन, then only you can pyramid the position. Loss में average करना गलत बात होता है. That's why I would suggest to keep the stop loss with your current position. Don't average in loss. You can average in profit always. So 95,000 आ गया है. Premium is at 237, 240. So it's respecting the resistance that price action zone. उसका resistance को respect कर रहा है. But in next half an hour or so, what might happen we don't know. 7:30 के बाद क्या हो सकता है. So that's why I'm giving you the levels. 95 180 के ऊपर you can exit. 95 200 के ऊपर you can go fresh long. And 94 900 के नीचे traders can pyramid into their put buying positions. So we are not able to catch more momentum today, but it's okay. Not every day is a good profitable day, and we have a time limit. So we will try to catch whatever next expiry is there. Next expiry will be crude oil in the next month, June. So we will try to catch the momentum in crude oil in the next expiry. So again, the same time and price stop levels, 95 180 till the evening, and below 94 900 I would advise to add more short positions, which can give you a good fall in gold, and your premium can go to around, I would say, 500 also if it goes below 94 900. So अभी 230 240 चल रहा है, but we are approaching towards the end of the session, so I'm giving you the time and price stops. So it's at 95 95 50 only. Okay, so thank you everyone for joining the session. We will meet again in the next month for crude oil expiry, and again we will be sharing some insights with you. Also, we'll be doing some sessions on the strategies also. So I hope you all like all these sessions and keep joining these sessions. It will help you all to boost your trading performance. Thank you all for joining.